Hello friends and welcome to the video on Kirchhoff's voltage law. Myself Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you how to solve numerical by using Kirchhoff's voltage law. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand Kirchhoff's voltage law, solve electric circuit by using Kirchhoff's voltage law. Reflection spot. Using mesh analysis, calculate the current through 10 ohm resistance. In previous video, we solved KVL numerical on type 1 and type 2. In this video, we learn type 3 numerical. Using mesh analysis, calculate current through 10 ohm resistance. This is one example in which value of this voltage is 16 volt, value of this resistance is 4 ohm, value of this voltage is 8 volt, this is 10 ohm, this resistance is 2 ohm and the value of this resistance is 6 ohm. This is our loop number 1 I1 and this is our loop number 2 I2. Before solving this circuit, first flow the loop I1 and I2 in whole circuit. Here current I1 start flowing from here, then current I1 enter from minus 16 volt I1 and due to this node the current is diverted and it is flow through the 10 ohm resistance. Now the loop I2. Now the current I2 start flowing from here and due to this node the current I2 is passes through the 4 ohm resistor and further this is passes through the 8 volt and comes through the 6 ohm resistance I2. Now we have to remember when the current flow from lower potential to higher potential, then current take it as a negative. When the current flow from the higher potential to lower potential, then current take it as a positive. Now apply KVL at loop 1. Step number 1. Apply KVL at loop 1. दिस इज आवर लूप नंबर 1. हम देख रहे हैं यहाँ पे करंट I1 माइनस से एंटर हो रहा है, सो वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज -16 प्लस देन दिस करंट आगे चल के 10 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है. लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे दो करंट है, I1 भी है और I2 भी है, लेकिन हम लूप 1 में KVL अप्लाई कर रहे हैं. सो I1 को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और I2 को हम निगेटिव कंसिडर करेंगे. सो 10 इंटू I1 माइनस I2. देन फर्दर दिस करंट इज फ्लोड थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस, सो प्लस 2 इंटू I1 इज इक्वल टू 0 माइनस 16 प्लस सॉल्व दिस ब्रैकेट 10 इंटू I1 10 I1 minus 10 into minus I2 is minus, so 10 into minus I2 is minus 10 I2 plus 2 into I1 is equal to 0. हम यहाँ पे देख रहे हैं I1 एंड I1 के दो टर्म हैं, प्लस 10 I1 प्लस 2 I1 दैट इज 12 I1. 10 I2 माइनस 10 I2 का एक ही टर्म है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे माइनस 10 I2 देन माइनस 16 इज इक्वल टू 0. 12 I1 माइनस 10 I2 इज इक्वल टू, जब हम माइनस 16 को इज इक्वल टू के दिस साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस 16 बन जाएगा प्लस 16. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ स्टेप नंबर 2. apply KVL at loop 2. loop 2 को आप देख रहे हो,
I2 का करंट 10 ओहम में से फ्लो हो रहा है, लेकिन आप फिर से यहाँ पे I1 करंट देख रहे हो, मतलब 10 ओहम में से I1 भी फ्लो हो रहा है और I2 भी फ्लो हो रहा है, लेकिन इस टाइम हम KVL लूप 2 में अप्लाई कर रहे हैं। सो हम I2 को प्लस लेंगे और I1 को माइनस लेंगे। सो 10 इंटू I2 minus I1 plus, then further this I2 current is flow through the 4 ohm resistance, so 4 into I2, again it is passes through the 8 volt, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो वो पास हो रहा है प्लस पोलैरिटी से। जब करंट प्लस पोलैरिटी से पास होता है तो हमें वहाँ पे प्लस कंसिडर करना है, सो प्लस 8। Then again this current is passes through the 6 ohm resistance, plus 6 into I2 is equal to 0. Solve this bracket, 10 into I2 minus 10 into I1 plus 4 into I2 plus 8 plus 6 I2 is equal to 0. I1 का एक ही टर्म है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे माइनस 10 I1, देन I2 के टर्म्स को कलेक्ट कीजिए, 10 I2 प्लस 4 I2 प्लस 6 I2, 10 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 20 I2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 I1 प्लस 20 I2 इज इक्वल टू, प्लस 8 को हम इज इक्वल टू के इधर साइड में लेके आएंगे तो प्लस 8 बन जाएगा माइनस 8। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टेप नंबर 3, सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 simultaneously. Write equation 1 and equation 2 here. Our first equation is 12I1 minus 10I2 is equal to 16, and second equation is minus 10I1 plus 20I2 is equal to minus 8. Put this value in calculator and we get the value of I1 and I2. Go to the mode setup, in which we can see that equation is in number 5, so press 5, in which lots of equation, but we have to choose the first equation because in our equation there is 2 unknown variables and 1 constant. So press 1, we get the matrix, put here the value. The coefficient of I1 is 12, the coefficient of I2 is minus 10, then the constant is 16. Then put another equation, the coefficient of I1 is minus 10, then coefficient of I2 is 20 and the constant is minus 8. Press is equal to, we get the value of x, that is our I1, 1.71 ampere. Again press is equal to, we get the value of y, that is 0.457. We get the answer of I2, 0.457 ampere. Step number 4, current through 10 ohm resistance. If the current in both the direction is downward or upward, then take it as a positive. If the current is one is upward and another is downward, take it as a negative. In 10 ohm we can see that the I1 is in downward direction and I2 is in upward direction. It means both the current are in opposite, so take it as a negative. So current in 10 ohm resistance is I1 minus I2. The value of current I1 is 1.714 and value of current I2 is 0.457. So we get the answer, current through 10 ohm resistance is 1.257 ampere. Thank you.